Hello, everyone. A very good evening to you all. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. So, are you fine? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. okay. So, let's start today the industrial law. So, I'm Joydeepa Bhattacharjee. I'm going to teach you the industrial part of law. Okay? Is it fine? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. One thing I'm requesting you all that please, whenever I'm going to teach you, okay, जितिया मैं तुम लोगों को पढ़ाबले गया सु, मैं तुम लोग को start पढ़ाने मतलब अभी वाली हूँ, तो you have to please take out your notebook, pen and notebook, so that if you have any doubt, you can ask me also, and whatever I will dictate, whatever I am going to explain you, you please write it down. Is it fine? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. Avilek, good evening. Good evening, ma'am. Ma'am, I want to know when mobile. Oh, it's okay, fine. You have joined. Nice. So let us start today's class. So today we are going to discuss about the Factories Act 1948. Factories Act 1948. Fine. So you know that India got independence in the year of 1947. India got independence in the year of 1947. And hello, please. We have started. We have started the Factories Act 1948. May I know your name, please? Okay, fine. So we have started the Factories Act 1948, and India get independence in the year of 1947. And after getting India independent, this act has started. Okay? Acha. এতিয়া মই তোমালোকক ক'বলৈ যাম I'm going to say that जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रो करना था द इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज टू ग्रो तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रो करना था सो वर्कर्स आ रहा था एक के बाद वर्कर्स ने ज्वाइन करना स्टार्ट किया न्यू इंडस्ट्रीज हैज बीन मेड ओके सो during that period, the Factories Act 1948, our legislature, they have planned that to make this Factories Act for the benefit of the workers, specially. So, what is the reason for the Factories Act has to be passed? The main reason is health and safety issues. अब जब वर्कर्स आना शुरू किया तो वर्कर्स का हेल्थ क्योंकि बहुत डेंजरस प्रोसेस चलता है फैक्ट्री के अंदर तो उसके लिए it is required that you have to take first priority to the workers. You have to give first priority to the health and safety of the workers. So first reason is health and safety issues. Next one, least welfare facility for workers. Welfare facilities for workers means that time it was means there was no any facility for the workers. ओके उन लोग के भलाई के लिए उन लोग के सेफ्टी के लिए हेल्थ के लिए कुछ भी ऐसा फैसिलिटीज नहीं था वर्कर्स के लिए पुअर वर्किंग कंडीशन जैसे आप 7 AM से स्टार्ट किए हो इंडस्ट्री में आना लेकिन आपका कोई टाइम शेड्यूल नहीं है यू विल बी इन द फैक्ट्री टिल 8 PM 9 PM लाइक दैट कोई भी एक टाइम शेड्यूल नहीं है तो पुअर वर्किंग कंडीशन working hours were not fixed that one I said that working hours were not fixed
After that, no system of annual leave with wages. You know about wages? What is wages? Wages, you know? Yes. The total income for the time period. Okay? No system. There was no system of annual. Annual means the yearly. Okay? Yearly leave. No leave was there with wages, with the main salary, with your salary. No leave was there with your payment. Okay? Next. Okay, the Factories Act 1948. I told you that it came after independence. It came after independence. So, the Factories Act 1948 में क्या हुआ था? ये enact हुआ था. It has been enacted. Enacted means the law has been made. It has been made. The Factories Act has been made. And it has commenced. It came into force when 1st April 1949. 1st April 1949. Fine? And it extends to whole of India. You may see that in your book it has been written that it has been extended to everywhere, included Jammu and Kashmir, including Jammu and Kashmir. Why? Because that time it was not there, the Article 370. So now, after inclusion of Article 370, it will be said that it has extended to the whole of India. Fine? Is it clear? Next, what was the objective? What was the main objective? Factories Act को लाना क्यों जरूरी था? मैंने आपको बोला है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ. इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू हुआ होना तो क्या हुआ? वर्कर्स आना चालू हो गया, वर्कर्स का अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो गया, but there was no safety measures, there was no particular time schedule, time period for working hours of the workers. Then there was no adequate safety measures. The main objective is to ensure adequate safety measures. First and foremost, the adequate safety measures. Because क्या किस लिए सेफ्टी मेजर्स किस लिए चाहिए? द थिंग इज दैट क्योंकि फैक्ट्री के अंदर बहुत डेंजरस काम चलते हैं. द डेंजरस प्रोसेसेस ऑलवेज, द डेंजरस प्रोसेसेस लाइक द हैजर्डस प्रोसेस that goes on every time inside the factory. You might be observed that formation of nickel inside the factory. It is very dangerous. So for these things, it has to ensure the adequate safety measures. Then to promote health and welfare of the workers. Health and welfare of the workers. Okay? Third one, to regulate working conditions in the factories. To regulate the working conditions of the factories. Fourth one, to provide protection to the workers from being exploited. From being exploited means, can you see me? What is being exploited? Yes, misusing. Suppose जैसे आया मतलब काम करने के लिए आया, especially the lady workers, they came to work in the factories suppose for 7 to 8 hours, but they have been exploited like without telling anything. They have to work for more than 9 hours, 10 hours, like that. So these are the things exploited means, to misuse. Is it clear this much? Any doubt? Okay, now what is factory? What is factory? You have to memorize this one, that what is factory according to section 2M of Factories Act 1948. You have to memorize. आप दूसरा सेक्शन याद करो नहीं करो वो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, but you have to memorize this one. This section you have to memorize. Factory
under section 2M of Factories Act 1948. Fine? Now, any premises, what is the meaning of premises? Suppose there is a land, and on that land, a building is there, okay? Inside that building, room is there, or house is there, or any space is there, then these are called premises. Suppose I am teaching here, this is a room, so it is also called as premises. Fine? Any premises, including the precincts, Now, what is called precincts? Precincts means आपके आजू बाजू, आपके आस पास, okay? आपके आस पास means a factory is there, okay? Premises, and premises के आजू बाजू जो है, that is called precincts, okay? Fine? Where 10 or more workers are or were working. Okay. Please make it are or were working. Are or were working means what? Are or were working means they are working or were working. कभी काम करता था, कभी काम होता था, ठीक है? Were working on any day of preceding 12 months, on any day. Suppose ये जो 12 months, January to December, fine. In between January to December, for any day, suppose in the month of March, on 3rd March, किसी ने काम किया, कितने काम किए? 10 or more workers. 10 or more workers ने काम किए, लेकिन एक दिन के लिए काम किए, तो फिर भी वो किसके अंडर गिरेगा? फैक्ट्री एक्ट के अंदर वो रहेगा, क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुड बी देयर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना पड़ेगा, एंड द थिंग इज दैट देयर शुड बी 10 or more workers are or were working on any day of preceding 12 months. वो एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, or half day also it may be. Fine? And in any part of which manufacturing process is being carried on. Manufacturing process को होना पड़ेगा. अगर जैसे manufacturing process, I will explain you later on what are the things there in manufacturing process. But manufacturing process में जो है, जो term है, which are included in the manufacturing process, that only will be called as under factory. But if there will be the thing which is not which is not been mentioned in the manufacturing process, then it will not be called under the Factories Act 1948. Okay, suppose manufacturing process में manufacturing process नहीं हो रहा है, वहाँ पे loading और unloading हो रहा है, loading और unloading हो रहा है, तो क्या वो factory कहलाएगा? No, it will not be called as factory. If there will be less than 10 workers, okay, less than 10 workers, then also it will not be called as factory. Okay, it should be 10 or more workers, and there should be manufacturing process, okay, for 1 day or half day, anything. In any part of which manufacturing process is being carried on with the aid of power, okay, it may be without the aid of power also, it may be with the aid of power also. Ordinary so carried means without the aid of power, okay, and with the aid of power means with electricity. Okay, is it clear? Or any premises including the precincts where 20 or more workers, okay, are working or were working on any day of preceding 12 months, कोई भी दिन 12 months के बीच में कोई भी half day or 1 day,
in any part of which manufacturing process is being carried on without the aid of power or is being ordinarily so called. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Any doubt? Any doubt? aid of power money with aid of power means electricity. Electricity য'ত হৈ আছে মানে aid of power মানে power লৈ power মানে কি হয় electricity লৈ use of electricity. Is it clear? যেনেকৈ আমি কোনো মেচিন ৱৰ্ক কৰি আছোঁ তে আমাৰতো ইলেক্ট্ৰিচিটি লাগিব ন we need na electricity, so for that with the aid of power, and without the aid of power means no machine works are going on and without electricity. Suppose যেনেকৈ tailoring হৈ আছে okay that manufacture hoy clothes okay but not means with the power nai without the aid of power. Is it clear? Fine. yes ma'am Okay, so you have to memorize. This is very easy. You have understood? এই Fine. ডেফিনেশ্যনটো মনত কৰিব লাগিব ন কোৱা এই ডেফিনেশ্যনটো বাই হাৰ্ট মনত কৰিব লাগিব by heart by heart চোৱা কেনেকৈ মনত কৰিবা first thing any premises okay any premises তুমি ভাবি লোৱা কি তোমাৰ ফ্যাক্টৰী কোড হৈ আছে তাত any premises এটা लैंड আছে लैंड है लैंड के अंदर रूम है ठीक है जो अभी जो क्लासरूम है दैट इज आल्सो कॉल्ड premises okay so any premises including the precincts माने तुम्हारे आसपास जो है अजवाड़ा पिछवाड़ा okay like that. Is it clear? yes ma'am Including the precincts where 10 or more workers or 20 or more workers 10 or more workers or 20 or more workers 10 or more workers when they work 10 or more workers okay and what they do they do the manufacturing process process okay you have to first tell that manufacturing process should be carried on. Without manufacturing process if you will not utter this line manufacturing process you will not get marks okay it will not be called as factory. Is it clear? yes ma'am मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को तुम्हें बोलना पड़ेगा यू हैव टू से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुड बी कैरिड ऑन ओके एंड विद द एड ऑफ पावर इन केस ऑफ 10 or more workers or ordinarily so carried on or in case of 20 or more workers without the aid of power or ordinarily so carried on okay and at any time on any day of preceding 12 months on any day it may be half day also it may be 1 day also it may be 2 days also okay it's the manufacturing process is going on or where going on okay or where going on कभी हुआ था किसी एक दिन हुआ था जहां पे 10 or more workers था नहीं तो 20 or more workers था with the aid of power or without the aid of power. ठीक है? Is it clear? Clear? Abhilek? yes ma'am Shall I go? Next one? yes Any doubt? no ma'am Any doubt? No. Now, what is the manufacturing process? This one you have to memorize. What is the manufacturing process? Manufacturing process is defined under section 2K. Under section 2K of Factories Act 1948. Okay? Under section 2K of Factories Act 1948. Now, what is the manufacturing process?
So these terms, these things should be there in the manufacturing process. Any process for making, altering, repairing, ornamenting, finishing, packing, oiling, cleaning, breaking up, demolishing, or otherwise treating or adapting any article or substance with a view to its use, sale, transport, delivery, or disposal. Can you memorize this one? Will it be easy for you? Will it? Easy hobo? Ma'am, try. Acha, now I'm giving you this one, see. Making, okay? ठीक है? Making का हो गया M. Altering का हो गया A. R का हो गया, ठीक है? Repairing का हो गया R. ठीक है? Fine. Ornamenting का हो गया O. ये क्या बन गया? Maro. That will be easy for you, I think. Okay, you memorize this one, Maro. So Maro means M for making. Okay, then A for altering. Fine. R for repairing. Then O for ornamenting. हो गया? You have to, you need not to make it tough. Just make it easy. याद रहेगा ना ये? मारो. मारो याद रहेगा? Yes, ma'am. Lakshmi, you have joined. Okay, fine. Good evening. Good evening, ma'am. So मारो तो याद रहेगा? Fine. Maro means, yes, it is very easy. If you'll make these things now, it will be easier for you to memorize. You have to find out that how you have to memorize. Take one letter and make it some, make it some sense. Then it will be easier for you to memorize. So for making, altering, repairing, ornamenting. हो गया? मारो हो गया? अब F, finishing, F. इसको छोड़ दो, ठीक है? इतना तक हो गया मारो. फिर F के बाद ये पैकिंग छोड़ दो. O क्या हुआ? ऑयलिंग क्या हुआ? O. ऑयलिंग O. फिर क्या हुआ? मारो, देन FO. फिर क्या बनाए बोलो? D. Okay. Then next, otherwise. Okay. O. Then what we can? For O. Okay, fine. Any other thing is there? Yes. Okay. मारो, फोड़ो. इतना मैं बना दी तुम लोग को. ठीक है? इतना तक इजी बन गया. मारो का M for making. M for making. Okay. A for altering. R for repairing. O for ornamenting. हो गया इतना तक? Next one, F. F for finishing. F for finishing. Fodo. Okay. FODO. Huh. Then O for oiling. Okay. O for oiling. D for demolishing. D for demolishing. Okay. D for demolishing. And O for otherwise. तो क्या बच गया अभी? पैकिंग बच गया. ठीक है? क्या बच गया? पैकिंग बच गया, क्लीनिंग बच गया, ब्रेकिंग अप बच गया. ये याद कर सकोगे?
packing, cleaning, breaking up. Okay, fine. Packing, cleaning, breaking up. ये 3 बज गया. इतना सकोगे? Is it clear? Lakshmi? Fine? Yes, ma'am. समझ में आ गया इतना? ये इसको कैसे मेमोराइज करना है समझ में आ गया? Yes, ma'am. Is it clear? It will be easier for you. Yes. Now, with a view to its use, sale, transport, delivery, or disposal. Okay, these things are under manufacturing process. मारो फोड़ो तो है ही, साथ में पैकिंग है, क्लीनिंग है, पैकिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, all these things are under manufacturing process. Next one, pumping. अगर जब पंप करते हो तो किसको पंप करते हो? आपको याद रखना पड़ेगा कि पंप हम किसको करते हैं? पानी को करते हैं, ऑयल को करते हैं, ऑयल, वाटर, देन सीवेज. ओके, ऑयल, वाटर, सीवेज और एनी अदर सब्सटेंस. पंप जब करते हैं आपको याद रखना है ना कि पंप किसको करते हैं, तो वो सोच के यू हैव टू राइट, यू हैव टू मेक इट अंडरस्टैंड फर्स्ट, देन यू हैव टू राइट. इज इट क्लियर? Pumping. When you are writing for pumping, you have to find out that what we do for what the things we do with pumping. Generating power, generating, transforming or transmitting power. ठीक है? Is it clear now? Generate मतलब किसको generate करते हैं? Power को करते हैं. तो generate जब करते हैं, when we generate means creating. Then we are transforming also and transmitting also, transforming also and transmitting also. What we generate, what we transmit, what we transform, that is power. Fine? Is it clear? Then composing, compose karna, you are composing something, you are composing. Composing types of printing by letter press. Printing कैसे होते हैं? लेटर से लेटर प्रेस, हम लोग प्रेस में जाते हैं तो प्रिंट करते हैं. यस, जनरली वी गो टू प्रेस फॉर प्रिंटिंग. सो प्रिंटिंग लेटर्स, फाइन. देन लिथोग्राफी मीन्स समथिंग, अ मेटल, on a metal you are writing, you are printing letters, that is called lithography. Okay, lithography, is it clear? On a metal surface you are printing the letters. Okay, you are writing something. Then photogravure, that is also like that. Photogravure means on a metal surface you are printing the photos, pictures. Fine? Or other similar process, or bookbinding. Bookbinding you know. So we go to the press generally. Composing types of printing. These are the types of printing. So these are coming into the manufacturing process. Fine? Means when you are, means एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि suppose 10 or more workers with the aid of power, okay, working in a factory, and they are doing lithography. So is it be called under Factory Act 1948? They will be, whether they will be called under the Factory Act 1948? Yes, because they are doing the manufacture. Direct नहीं भी आ सकता है. Direct the question will not come. It may come in the process of lithography, letter press. So these things you have to memorize. एक तो मैंने बोल दिया मारो फोड़ो, और जो बाकी है it will be clear. Pumping, जैसे pumping का काम हो रहा है तो you have to memorize these things. Okay? Fine? Then constructing, reconstructing, repairing, refitting, finishing or breaking up ships or vessels. Ships, बड़े बड़े ships को क्या बोलते हैं? Ships तो है ही, और vessels. Vessels, you know, the large boats that are called, those are called as vessels. The large boats, जो बड़े बड़े बोट होते हैं ना, नाव होते हैं ना बड़े बड़े, तो उन नाव को क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं. तो उनका जो रिपेयर हो रहा है, उनका जो रीफिटिंग हो रहा है, रिपेयर, तो उनको जो डिजाइन दे रहा है, तो दोज थिंग्स मतलब कहाँ पे आएगा? कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर आएगा. ठीक है? नेक्स्ट, प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज. ओके, प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज, ये क्या है? ये जैसे
आपने देखा है मछली, फिश आते हैं आइस में स्टोर करते हैं ना, तो वो भी इट विल कम अंडर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. फिर fruits, vegetables, those things also, because they come from the far away places. Suppose we are staying in Assam and the things are coming from Andhra, things are coming from Mumbai, Bangalore, or Kolkata, like that. So all these things, when they are coming, so they have to be stored, no? They have to be stored in a what? The cold storage. So that will be called under the manufacturing process. Is it clear this much? Clear? Any doubt? Any doubt? Any doubt? My students, No, ma'am. you all are my beloved students. So any doubt, anytime you may ask me. Okay? Next, shall I go to the next point? Sure? Yes, ma'am. Okay, thank you. Need to go down. Yes, now we will discuss about the hazardous process. Hazardous process. Hazard means dangerous. Yes or not? Hazard means the word itself speaks the answer. Yes or not? The word itself speaks the answer. Hazard. Hazard means very dangerous. Okay. So hazardous process means all the dangerous processes are going on. Where it goes on? Inside the factories. Okay. So any process. So what is called hazardous process? Any process or any activity. Any process or any activity where in the industry or in a factory, okay, where special care is not taken. कोई भी काम, कोई भी प्रोसेस एक इंडस्ट्री के अंदर और एक फैक्ट्री के अंदर हो रहा है जहां पे स्पेशल केयर नहीं लिया गया है, जहां पे स्पेशल केयर नहीं लिया गया है, तो क्या होगा? उसका जो रॉ मटेरियल्स है, उसका जो रॉ मटेरियल्स है जो यूज हुआ है, जो रॉ मटेरियल्स यूज हुआ है, और इंटरमीडिएट और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स, वेस्ट और एफ्लुएंस, क्या होगा? That will create a havoc, means that will create material impairment to the health of the people, to the health of the workers के ऊपर भी उसका हेल्थ होगा, हेल्थ इम्पेयरमेंट होगा, मेटेरियल इम्पेयरमेंट होगा, हेल्थ स्टेटस इट विल become very bad. Okay, people will get ill, people will get sick, or it will result in the pollution of the environments. The entire environment will get polluted. Is it clear? अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. जो ये रॉ मटेरियल्स है, जैसे क्या बोलूँ, क्या एग्जाम्पल दूँ? सपोज फर्नीचर का दुकान है. ओके, वन फैक्ट्री और इंडस्ट्री ऑफ फर्नीचर का काम हो रहा है, ठीक है. तो फर्नीचर का जब काम हो रहा है तो वहां पे रॉ मटेरियल क्या हो गया? वहां पे रॉ मटेरियल क्या है? वुड इज द रॉ मटेरियल. फाइन. फर्नीचर का काम चल रहा है किसके अंदर? इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर. और वहां पे क्या है रॉ मटेरियल? दैट इज वुड. फाइन. अब वुड को घिसा गया है. घिसते हैं ना, जब एक फर्नीचर को बनाते हैं तो उसमें वुड को घिसते हैं. उसका जो इंटरमीडिएट जैसे चेयर उसको चेयर बना रहा है और उसको बना के चेयर का एक स्ट्रक्चर दे दिया. चेयर का एक स्ट्रक्चर वुड था, वुड को घस के उसको बनाया. क्या बनाया? चेयर बना दिया. तो चेयर क्या हुआ? इंटरमीडिएट. चेयर बन गया इंटरमीडिएट. और उसमें
सोफा दे दिया, चेयर में सोफा दे दिया, तो उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और फिनिश्ड प्रोडक्ट उसको पॉलिश भी कर लिया, पॉलिश टॉलिश करके उसको क्या हो गया, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और उसका बाई प्रोडक्ट रह गया। बाई प्रोडक्ट क्या है, जो हाँ यस द डस्ट, द जो काठ का जो घस के जो डस्ट जो निकला, दैट इज कॉल्ड द बाई प्रोडक्ट्स और वेस्ट और एफ्लुएंस। इज इट क्लियर? तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जो रॉ डस्ट है जो वो है उसको क्या करेंगे, जो काठ को जो वुड को जो घस घस के निकला गया बाई प्रोडक्ट, जो एफ्लुएंस है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग ऐसे ही फेंक देंगे। ऐसे ही अगर फेंक देंगे तो इट विल पोल्यूट द एनवायरमेंट और इट विल अफेक्ट द health of the people. So what we have to do, we have to give it to the villagers, we have to give it to the means जो below poverty के है आदमी, उनको दे देंगे ताकि उन लोग का चूल्हा उन लोग जला सके, that one they can use it, yes or not, they can use it nicely, yes or not, for their cooking purpose. Is it clear? Any doubt? Any doubt? No, ma'am. Okay, now another thing, suppose कोई भी हैजर्डस प्रोसेस जैसे हम लोग एक फैक्ट्री के अंदर, जैसे कोई भी ग्लास का फैक्ट्री है, ग्लास का फैक्ट्री में ग्लास बन रहा है, ठीक है, ग्लास बन रहा है। ग्लास किससे बनते हैं, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ ग्लास इज मेड? सैंड, फ्रॉम सैंड ग्लास इज मेड। ग्लास किससे बनता है? सैंड से, बाली से, ठीक है। तो जब ग्लास को बनाया जा रहा है तो उसमें तो कभी दैट इज ऑल्सो डेंजरस ना, पीपल शुड बी केयरफुल, द वर्कर्स शुड बी केयरफुल व्हेन दे आर मेकिंग दैट ग्लास, ओके। तो अगर उसका बाई प्रोडक्ट हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो किसी का मटेरियल इम्पेयरमेंट होगा ना, वो तो पर्सन को कभी चुभेगा ना ग्लास, सो वी हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट, ओके। वी हैव टू फर्स्ट वी हैव टू मेक इट, ऐसे जगह पे उसको जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको ऐसे जगह पे रखो जहां पे कोई भी आदमी को चोट लगना नहीं चाहिए और द एनवायरमेंट शुड नॉट बी पोल्यूटेड। फाइन, इज इट क्लियर? ओके, एनी डाउट? एनी डाउट? No, ma'am. Okay, fine. अच्छा, now I'm going here, wait. यहाँ पे मैंने बोला था कि इसका जो फैक्ट्रीज एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट वन, टू एंश्योर एडुकेट सेफ्टी मेजर्स, फाइन, टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर। अच्छा, जो हेल्थ एंड वेलफेयर मैंने बोला वर्कर का, तो जब हेल्थ और वेलफेयर वर्कर का एक परखना है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट द वर्कर इज fit or not when he or she is going to work in a factory. First thing what we have to see, that he or she should be fit to work in a factory. How we will see? We will see by getting the fitness certificate. The factory workers who will work in the factory, the worker should first show the fitness certificate. और उसको कौन देगा वो फिटनेस सर्टिफिकेट? वो कौन उसे कौन देगा जो फिटनेस सर्टिफिकेट? देयर इज अ पर्टिकुलर पर्सन कॉल्ड सर्टिफाइड सर्जन. That will be a doctor, a medical practitioner. So he or she will be called as certified surgeon, and he or she, when the certified surgeon will provide the fitness certificate to the worker that he or she is fit to work in a factory, then
The worker can work in a factory without any health issues. Okay, fine. Now अच्छा, फैक्ट्री में मैं फैक्ट्री को लेके मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपको कि सपोज एक कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी XYZ एक कंपनी है और उसमें क्या हुआ, उसमें 3 to 4 workers were working 3 to 4 workers were working with the aid of power और 3 to 4 वर्कर्स जो काम कर रहे थे, काम करते करते फर्स्ट जैसे वो लोग काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन के लिए क्या हुआ उसमें, मोर 6 वर्कर्स हैव वर्कड फॉर 1 डे. ओके, तो अभी उनका जो सेफ्टी मेजर्स है, वो जो उन लोग को जो वेजेस है, ये जो मिलना चाहिए, जो उन लोग को जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सो वेदर दे विल बी carried on under the Factories Act, they will be called under Factories Act 1948. Yes, অভিলেখ পিছত কিন্তু আকৌ নাইকিয়া হৈ গ'ল. এদিনৰ 3 to এটা ফ্যাক্টরি আছে XYZ. ओके, XYZ एक फैक्ट्री है, one factory is there, that is called XYZ. 3 to 4 workers, they were working continuously, okay, in that factory. But for one day 6 more workers have worked. 6 more workers have worked, and they want the safety measures from the under the Factories Act 1948. So whether it will be followed under the Factories Act 1948? Yes, ma'am. Yes. Then Lakshmi? Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Everybody yes ma'am or no ma'am? Rakhi Sharma? Ma'am, no. No. Okay. Then another Samudra? Yes, ma'am. Okay. Fine. Acha, Rakhi Sharma, why it is no? मैम क्योंकि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से 4 लोग ही वो एबीसी में काम कर रहे थे, Hmm. तो वो तो फैक्टरीज एक्ट के अंदर तो वो उन लोग नहीं आएंगे, क्योंकि मोर देन 10 होना चाहिए वर्कर. फिर बीच में लेकिन- 6 वर्कर्स आए, 6 मोर वर्कर्स आए. अगर 6 को हम लोग सेपरेटली देखेंगे तो वो 6 ही हुआ ना, मोर देन 10 तो हुआ नहीं. 6 जब आए फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, 6 जब आए फैक्ट्री के अंदर, तो 6 को 4 के साथ अगर काउंट करोगे तो कितना होगा? मैम आपने बोला 3 to 4, हाँ, 4 वर्कर्स, सपोज 4 वर्कर्स. 3 से कंपेयर किया ना तो 9 हाँ. हुआ, तो उसे अच्छा, ठीक है, No. फाइन, वेरी नाइस. ओके, वेरी नाइस. अच्छा, मैंने बोला 3 to 4, ठीक है, फाइन. 4 वर्कर्स, तो 4 वर्कर्स काम कर रहे थे, ठीक है, कंटिन्यूअसली दे वर वर्किंग. आफ्टर दैट फॉर 1 day 6 मोर वर्कर्स ज्वाइंड, ठीक है, 6 मोर वर्कर्स ने ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने तो 6 वर्कर्स उस समय ज्वाइन किए, लेकिन उसके बाद फिर छोड़ दिए, फिर 4 वर्कर्स बन गए. तब मैम इंक्लूड होगा, तब क्या होगा? तब होगा मैम. इंक्लूड होगा तब फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर होगा? यस और नो? मैम फिर से एक बार रिपीट कीजिए तो. XYZ एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में
4 वर्कर्स काम कर रहे थे, 4 वर्कर्स हमेशा काम कर रहे, ठीक है, लेकिन एक दिन के लिए उसमें 6 वर्कर्स ऐड हो गया, 6 वर्कर्स मोर काम किए, मतलब 4 वर्कर्स है उसके साथ 6 वर्कर्स भी ज्वाइन किए, तो कितने हुए 10 वर्कर्स, लेकिन एक दिन के लिए काम किए। फिर उन्होंने ये बोला कि ये क्या फैक्ट्री, उन्होंने अपना जो प्रोटेक्शन मांगा, उन्होंने अपना सेफ्टी मांगा, तो अभी अगर फैक्ट्रीज एक्ट के 1948 के अंदर अगर नहीं आएगा तो दे विल नॉट गेट द फैसिलिटीज। So if they want the facilities, the factory should come under the come under the what? Come under the Factories Act 1948. तो क्या ये अब बोलो अभी कि ये क्या फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर है या नहीं है? मैम है, क्योंकि 1 डेज के लिए भी वो काम करेगा तो उसको मिलेगा मैम। हाँ हाँ, मैम, एक ये दिन के लिए होगा भी काम करेगा। फाइन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड that you all have understood. Yes, for 1 day if 10 workers they have joined together, they have joined, okay, for a manufacturing process in a factory, फिर भी उसको क्या बोला जाएगा, वो फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर आ रहा है। They will get the same facilities, the people, the workers should get the same facilities if they are under the Factories Act 1948. ठीक है? Is it clear? यस मैम। Fine? Okay. Now, occupier. We are going to discuss about the occupier. Who is called the occupier? Occupier कौन है? Occupier किसको बोलते हैं? Whether the owner is called the occupier? जैसे मेरा एक लैंड है, उसमें मैंने एक फैक्ट्री शुरू किया है, ठीक है, बट आई एम नॉट लुकिंग आफ्टर द एंटायर थिंग इनसाइड द फैक्ट्री, वेटेवर द, मतलब कोई भी चीज़ अगर जो भी फैक्ट्री के अंदर हो रहा है तो मैं वो नहीं देख रही हूँ, बट मैं ओनर हूँ, तो बट आई विल नॉट बी कॉल्ड एज द occupier. Occupier is the person who has the ultimate control over the affairs of factory. फैक्ट्री के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, वर्कर्स कब तक काम कर रहे हैं, उसका टाइम पीरियड क्या है, उसको कितना सैलरी मिलना चाहिए, all these things will be decided by the occupier. Is it clear? The person who has the ultimate control over the affairs of the factory. ठीक है? Is it clear? ठीक है? He will Yes, take, the occupier will take the decisions of the factory. Okay? The occupier will take the decisions of the factory. ठीक है? Now, in case of a farm or AOI, AOI means Association of Individuals, जो एक पार्टनरशिप में फर्म एक चलाते हैं ना, पार्टनरशिप में, that is called Association of Individual. तो in case of farm or AOI means, AOI का मीनिंग आप लिख लो, Association of Individual, Association of Individual, in case of partnership firm. Okay? In case of partnership firm, AOI means Association of Individual. Now, who will be called as the occupier in case of a partnership firm or association of individual? Any one of the individual partners or members. Okay? कोई भी पार्टनर, जैसे 2 हुआ पार्टनर, 3 हुआ, उनमें से कोई भी एक, एनी वन, कोई भी पार्टनर को क्या बोलेंगे हम? occupier बोलेंगे. Any one of the individual partners or members. Okay? Now, in case of a company, there are directors, yes or not? The directors are there in case of a company. Oil India is a company, and here many directors are there. So, those directors will be called as the occupier. Is it clear? Fine?
Now, in case of a factory who is owned or controlled by the central government or any state government or any local institute or local authority, there will the person or people appointed to manage affairs of factory by the central government. जैसे central government ने select जो किया है, जैसे कोई भी factory है उसमें जो central government बा state government बा local authority, कोई भी तीनों में से जो कोई भी एक पर्सन को सिलेक्ट करता है, ऑथराइजेशन देता है कि तुमको फैक्ट्री को देखना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट्री, यू हैव टू control the affairs of the factory. He will be the ultimate control over the affairs of the factory. That person will be called as occupier. Is it clear? और जो फैक्ट्री एक्ट जो 1948 है, ये ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हो और पब्लिक हो, ऐसा नहीं है कि इसमें फैक्ट्री एक्ट लगेगा इसमें नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है. फैक्ट्री एक्ट 1948 मतलब कोई भी फैक्ट्री हो, वो स्टेट गवर्नमेंट चला रहा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, कोई भी चला रहा हो, लेकिन वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंडर ही आएगा. ठीक है. नेक्स्ट. Now, in case of a ship or vessels, you may say, okay, in case of a ship which is being repaired, जिसका repair हो रहा है, or on which maintenance work is being carried out in a dry dock. Do you know what is dry dock? Dry dock पता है? हाँ? हाँ, शिप को जहाँ पे रिपेयर किया जाता है. एंड वो क्या होता है ना, ड्राई डॉक एक फ्लैट एक सरफेस होता है, वहाँ पे पानी रहता है, उस जगह में पानी रहता है. हाँ, यस. एंड द शिप विल बी, मतलब उसको शिप को वहाँ पे मतलब लेके जाता है, रेज करके उसको पानी को फिर रिलीज कर देते हैं. सो दैट इज कॉल्ड अ ड्राई डॉक एंड इट मेंटेन्स देयर only in a dry dock only the ship maintenance or the ship repairment goes on. So in case of a ship where जिस शिप का रिपेयरिंग चल रहा है, जिस शिप का ड्राई डॉक में रिपेयरमेंट चल रहा है, ठीक है, उसका मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, तो उसका कौन होगा ऑक्युपायर? हु विल बी द ऑक्युपायर? द ओनर ऑफ द शिप. शिप का जो ओनर है, जो शिप का ओनर है, उसको भी आप बोल सकते हो ऑक्युपायर. नहीं तो हिज एजेंट, कि शिप को जो चला रहा है उसका एजेंट जो है, जो रिपेयर करने के लिए लाया एक एजेंट है, उसको भी आप बोल सकते हो ऑक्युपायर. और मास्टर or other office in charge or any person who contracts with any one of the above to carry out repair or maintenance. Is it clear? Fine? यस मैम. समझ में आया? हाँ मैम. Any doubt? Yes, ma'am. Any doubt you have? इतना तक आप लोग को कुछ भी डाउट है? No. Now, what should be the responsibility of the occupier? Occupier तो आप जान गए हो कि occupier है, ये है occupier, who should have the ultimate control over the affairs of the factory. That person is called a occupier. Fine. Now, एक occupier का responsibility क्या है? आपको जानना है ना, वो occupier तो बैठा दिए, लेकिन उसका responsibility क्या है? वो क्या काम करेगा? तो what is the responsibility of the occupier? Firstly, to lay down detailed policy. क्या करना है? वो health and safety. एक वर्कर का पहले आपको क्या देखना है कि उसका health and safety देखना है. That he has shown, he or she has shown the fitness certificate or not. To lay down, उसका detailed policy बनाना है कि उसका फिटनेस सर्टिफिकेट है या नहीं. और फिटनेस सर्टिफिकेट कौन देगा? हु विल गिव? द सर्टिफाइड सर्जन. द सर्टिफाइड सर्जन. ओके, सर्टिफाइड सर्जन विल गिव द फिटनेस सर्टिफिकेट. किसको देगा? वर्कर्स को देगा. किसके लिए? फॉर देयर सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, टू डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन. टू डिस्क्लोज
all the information regarding health hazards and measures to overcome such hazards or to handling of materials or substances in the manufacture, transportation, storage, etc. उसको क्या बोलना है, उसको सारा बात बताना है. क्या बताना है कि देखो अभी ये फैक्ट्री है, ये निकल का फैक्ट्री है, इसमें ये डेंजरस चीज होता है, हैजर्डस सब्सटेंस यहाँ पे होता है. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑल्सो, यू हैव टू बी केयरफुल ऑल्सो वाइल वर्किंग दिस डेंजरस थिंग्स. तो आपको बोलना है. ये किसका काम है? ऑक्युपायर का काम है. ओके जब आप एक आते हो ना फैक्ट्री के अंदर, कोई वर्कर आता है तो वर्कर को दिखाता है ना कि देखो अभी आज मैंने, जैसे मैं एक वर्कर हूँ, मैं एक फैक्ट्री में ज्वाइन की हूँ, तो मुझे दिखाएगा कि हाँ ये देखो ये यहाँ पे ये काम होता है और आज तुमको ये सब काम करना पड़ेगा, और ये लेकिन ये तुमको कॉन्शियसली करना पड़ेगा. यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो, एंड काम भी होना चाहिए और तुम अपना सेफ्टी भी देखो. ठीक है, तो ये किसका काम है? ऑक्युपायर का काम है. दिस इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्युपायर. फाइन, इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट? नो. नेक्स्ट वन, to draw up an on-site emergency plan and disaster control measures. जैसे ऑक्युपायर को हमेशा क्या देखना है कि फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं. कभी अगर आग लग गया, फट से आग लग गया फैक्ट्री में, तो आप कैसे आप मैनेज करोगे? तो ऑक्युपायर को ये भी बोलना है, देखो तुम ये काम करने जा रहे हो, वर्कर को बोलना है अभी बाई चांस अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम, तुमको ऐसा लगा कि आग लग गया, कुछ हो गया, तो यहाँ पे लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर है, यहाँ पे कुछ सेफ्टी थिंग्स है, वो सब तुम देख लेना. अंडरस्टूड? टू ड्रॉ अप एन ऑन साइट इमरजेंसी. ऑन साइट आपको दिखाना है कि ये इमरजेंसी डोर है, इससे आपको निकलना है, ये इमरजेंसी डोर है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है. सो दैट वन हु विल शो? दैट वन द ऑक्युपायर विल शो टू होम द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री. ठीक है? Make known to the workers and general public living in the vicinity. Vicinity means the surrounding areas. जहाँ पे फैक्ट्री है उसके जो सराउंडिंग एरियाज है, वहाँ पे जो जनरल पब्लिक है उनको भी आपको बोलना है. किसको बोलना है? किसको बोलना है? जो जनरल पब्लिक है उनको बोलना है. कौन बोलेगा? ऑक्युपायर का ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऑक्युपायर क्या बोलेगा कि देखिए ये फैक्ट्री में ये काम हो रहा है, तो आप थोड़ा कॉन्शियस रहिए. आपका अगर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो ये इमरजेंसी पाथ है, इसके थ्रू से आप चले जाइए. ठीक है? इज इट क्लियर? एंड द सेफ्टी मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन केस ऑफ एक्सीडेंट. Okay, fine. The safety measures. What safety measures has to be taken? How you have to take those safety measures? Those has to be told by the occupier to the workers and to the general public of the vicinity. Okay? Is it clear? Any doubt? No, ma'am. Okay, fine. Today this much I will end up here. Next day I will take the next class. Okay? So thank you one and all. Bye-bye. Ma'am. Thank you, Bye, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am.